Good morning students. Today we are going to discuss about the liquid state, okay, which is another state of matter. Basically, earlier we have seen that in the physical classification of matter there are three states: the solid state, the liquid state and the gaseous state. Earlier we have discussed about the solid state. Now we are going to discuss about the liquid state, okay. So let's start. Students, as our topic is the liquid state, so firstly we must have the idea about its definition and some of its example. After that we will be discussing about the properties of liquid, okay. So students, अभी तक हमने पढ़ा कि जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक तरल और एक गैस, ओके. सो हम लोग अभी तक ठोस अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम लोग तरल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द लिक्विड स्टेट, ओके. सो टॉकिंग अबाउट इट स्टूडेंट्स, अ लिक्विड स्टेट इज़ नॉट रिजिड. You can see here, as we have seen that solid state is rigid. जैसे ठोस पदार्थ सख्त होते हैं वैसे तरल पदार्थ सख्त नहीं होते हैं. इट फ्लोज, उनमें एक मूवमेंट होता है, वो फ्लो करते हैं, बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, ओके. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द लिक्विड substance or liquid state have a definite volume, okay. And also liquid have no definite shape. इनका अपना कोई शेप नहीं होता है. हाँ, ये कहते हैं कि इनको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसका शेप ले लेते हैं. लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके. सो सपोज you have taken some amount of water, okay, and you have keep the water in a container like this, okay. So the water will take the shape of the container. Again, suppose we are changing the container, suppose the container is this time like this, okay, then also the water will take the shape of the container, okay. So this is what the basic condition for liquid, that is it take the shape of the container, as if it do not have a definite shape but it has a definite volume. We will discuss about this later. Firstly, let's have some example of the liquid state. So students, in your day to day life, आपके दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत से तरल पदार्थ हैं. फॉर एग्जाम्पल like water, like lemon juice, you can say like cold drinks, like tea, coffee, whatever you are taking, okay, whatever you are drinking, that is all the example of liquids. आप जो भी तरल लेते हैं वो सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. अब हम लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. सो हियर यू कैन सी द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ possess fluidity, okay. Students, you can assume this condition also, having some idea that if you take water in any container and you just tilt the container, then what will happen? The liquid will fall down, okay. Or if you will throw it, then also it will have some fluidity. So this is what the property of a liquid, they possess फ्लूइडिटी, ओके. मतलब वो मूवेबल होते हैं, उनमें एक मूवमेंट होता है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न, ओके. what I am saying, suppose here we are taking the particles of liquid, okay. So suppose here are the particles of liquid. It can be here, it can be here, it can be here. It may be have force of attraction. So in this manner the particles of liquid are arranged. So basically you can see that they have no fixed pattern, okay. The particles do not have any fixed pattern.
और मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी फिक्स पैटर्न, मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे contain fluidity or they possess fluidity. Okay, now students talking about the second, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं. So liquids possesses definite volume. Earlier also we have seen this property that liquids have definite volume. इससे पहले भी हमने देखा कि लिक्विड में definite volume होता है. Okay, ऐसा क्यों होता है? Why it is so? Students, just look here. Basically, at ordinary temperature and pressure, the molecules in a liquid are much close together. Okay, so students, just suppose a condition. Suppose the temperature is ordinary temperature. Basically, it is 25 degrees Celsius or 20 degrees Celsius. Basically, assume it as 25 degrees Celsius. Then what happen at this temperature? The molecules in liquid are much close together. So again, let's have an example of water, and we are talking about the molecules of water. So you can see the molecules of water at ordinary temperature are much closer. तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं. ओके, और इस पास होने की वजह से इनके अंदर क्या होता है, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बिकॉज ऑफ the closeness, the mutual attraction is strong. Okay, and इस mutual attraction की वजह से ये जो molecules हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये molecules एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये मूव अपार्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं हो पाते हैं. एज इफ द यू कैन से दैट म्यूचुअल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग. Okay, and the particles are not moving apart, so that's why they have a definite volume. जब वो एक मतलब उनका एक फिक्स है कि they have a mutual force of attraction. Okay, they have mutual attraction, particles are not moving here and there, so we can calculate their volume easily. Okay, as the particles are not moving here and there. But you have to understood this, that this is happening at ordinary temperature. Okay, don't assume this at you can say the boiling temperature or the freezing temperature. So suppose again if we are taking the example of water, we have taken the particles of water are like this, they have mutual force of attraction and whatever it is. But suppose we just boil it, okay, and temperature is raised to suppose 80 degrees Celsius, then what will happen, particles will escape. Okay, basically water will be escape in the form of water vapor. So what happened there, we cannot calculate the volume of the container. Basically some of the particles will escape. So this is what that the second property, that is liquid possesses definite volume. Now students, talking about the third, they have no definite shape. Why it is so, students? Because molecules move randomly and collide each other. Okay, so for this you have to just assume a condition. Suppose these are the particles and they have just a random movement. Okay, they are just moving randomly here and there, and basically because of this and they collide each other, वो आपस में लड़ जाते हैं, and thus they do not possess any definite shape, जिसकी वजह से इनका कोई definite shape नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट. थैंक यू क्लास. तो ये पूरा तरल पदार्थ के बारे में था. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में. ओके, थैंक यू क्लास.